So can I start? Yes, please. A very good afternoon to all of you. आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बालकृष्ण शर्मा नवीन शासकीय महाविद्यालय शाजापुर द्वारा आयोजित आज इस एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन IQAC के तत्वाधान में किया जा रहा है। इस एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं सुधीर सवासिया, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स डिपार्टमेंट, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय वेबिनार का विषय अध्ययन और अध्यापन में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग एवं उपयोगिता है। जैसा कि कोविड टाइम में हमने देखा था कि शिक्षण के लिए हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस डाउनलोड किए और इन एप्लीकेशंस के जरिए हमने विद्यार्थियों से जुड़ना शुरू किया, जिससे शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। प्राचीन काल से आधुनिक समय तक अध्ययन और अध्यापन में समय समय पर शिक्षण की तकनीकियों में विकास होता रहा है, जिससे अध्ययन और अध्यापन दोनों ही सरल और सुगम बन पाते हैं। इस आधुनिक युग में ई लर्निंग और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षण अधिक रोचक और आसान होता जा रहा है। इंटरनेट तथा वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं व उनको घर बैठे पढ़ा सकते हैं। वर्तमान में इसी आवश्यकता को देखते हुए आज के वेबिनार का शीर्षक अध्ययन और अध्यापन में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग एवं उपयोगिता रखा गया है। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष आदरणीय विपुल कसेरा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आप आए और हमारे प्रतिभागियों को मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय विपुल कसेरा जी। अरविंद सर। सर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आदरणीय अध्यक्ष महोदय थोड़ा हट गए हैं। वो शॉर्टली एक बार फिर से ऐड ऑन होते हैं। मैं उनको ऑन स्क्रीन लेता हूँ। ओके ओनली विद इन सेकेंड। ओके। सुधीर सर। हाँ जी सर। टेक्निकल ग्लिच की वजह से आदरणीय विपुल सर ऐड नहीं हो पा रहे हैं, तो आप महाविद्यालय के प्राचार्य सर का अभी ऐड ऑन करवा लीजिए प्लीज। ओके ओके ठीक जी। ओके। किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कसेरा जी नहीं जुड़ पा रहे हैं। अब मैं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय एवं संरक्षक डॉक्टर RK राठौर सर को आमंत्रित करना चाहूँगा। सर, आप आएं और स्वागत की इस बेला में हमारे सम्मानित अतिथि वक्ताओं और प्रतिभागियों का स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय सर। इस राष्ट्रीय वेबिनार में जुड़े हुए सभी महानुभावों का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि विदित है, आज इस वेबिनार में अध्ययन अध्यापन में आधुनिक पद्धति का प्रयोग और उपयोगिता विषय पर यह वेबिनार आयोजित है। मैं BKSN महाविद्यालय की ओर से सभी का स्वागत करता हूं। स्वागत की श्रृंखला में सबसे पहले मैं उज्जैन संभाग के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर HL अनिर्बल साहब का स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा। इस वेबिनार में हमसे जुड़े हुए हैं जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष माननीय विपुल कसेरा जी। मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रथम वक्ता के रूप में कीनोट स्पीकर डॉक्टर दीपक कुमार जी,
जो आज के वक्ता हैं हमारे पहले, इनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगा। दूसरे वक्ता के रूप में डॉक्टर मनोरंजन दत्ता जी हमसे जुड़े हुए हैं। मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेरी ओर से और महाविद्यालय परिवार की ओर से। हमसे जुड़े हुए हैं IQAC कोऑर्डिनेटर के रूप में आदरणीय डॉक्टर SK तिवारी जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। वेबिनार के संयोजन में हमारी महाविद्यालय की टीम लगी हुई है। तो सबसे पहले वेबिनार संयोजक प्रोफेसर सुधीर सवासिया जी का अभिनंदन है, स्वागत करना चाहूँगा। सह संयोजक के रूप में डॉक्टर राजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। वेबिनार के संगठन सचिव के रूप में डॉक्टर अरुण बोड़ाने जी हमारे साथ हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। संयुक्त सचिव के रूप में डॉक्टर प्रकाश बर्फा जी, काफ़ी दिनों से मेहनत ये हमारी टीम कर रही है, मैं आपका भी स्वागत करना चाहूँगा। इस वेबिनार में जुड़े हुए जिले के समस्त प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक और हमारा कॉलेज स्टाफ का मैं स्वागत करना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा। जिले के साथ ही हमारे महाविद्यालय के समस्त स्टाफ, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो इस समय वेबिनार में जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और स्वागत की इस अंतिम कड़ी में वेबिनार से जुड़े हुए हमारे महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थी, हमने लिंक वहाँ प्रेषित कर दी गई है, जो इस समय जुड़े हुए हैं वेबिनार से, मैं आपका मेरी ओर से और महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूं। और हमारे जो कन्वीनर या हमारे जो सूत्रधार हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। Sudhir sir, you are not audible. Excuse me, Sudhir sir, your voice is not coming. Am I audible? Arvind sir. Yes sir, you are audible now. ओके सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा महाविद्यालय के IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर SK तिवारी सर को। सर, आप आए और आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार की आवश्यकता और उपयोगिता से सबको अवगत कराने की कृपा करें। आदरणीय SK तिवारी सर। आज के इस वेबिनार में शामिल हुए हमारे उज्जैन संभाग के अतिरिक्त संचालक महोदय आदरणीय डॉक्टर HL अनिजवाल सर, हमारी महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष माननीय विपुल कसेरा जी, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य एवं संरक्षक सम्माननीय डॉक्टर RKS राठौर सर, आज के वेबिनार के प्रथम वक्ता डॉक्टर दीपक कुमार, जो कि प्रोजेक्ट साइंटिस्ट CSIR/CSIO चंडीगढ़ में हैं। दूसरे वक्ता डॉक्टर मनोरंजन दत्ता जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स के हैं और लखीमपुर कॉलेज असम में कार्यरत हैं। इसके अलावा वेबिनार के कन्वीनर प्रोफेसर सुधीर सवासिया जी, को कन्वीनर डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार बोड़ाने, ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रोफेसर प्रकाश बर्फा और टेक्निकल सपोर्ट देने वाले प्रोफेसर अरविंद शर्मा, डॉक्टर नीलेश महाजन जी, महाविद्यालय के सभी अन्य प्राध्यापक साथीगण, हमारे जिले के जुड़े हुए सभी प्राचार्य महोदय, सभी प्राध्यापक गण और सभी विद्यार्थीगण और अन्य प्रतिभागी। जैसा कि हमारे प्राचार्य महोदय ने बताया कि आज के वेबिनार का टॉपिक क्या है, एक बार मैं फिर से वेबिनार का टॉपिक आपको बता देता हूं। इसका नाम है यूज एंड यूटिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन स्टडी एंड टीचिंग। अगर हम हिंदी में बोलें, इसका नाम है अध्ययन और अध्यापन में आधुनिक तकनीक का प्रयोग और उपयोगिता। हम लोग जानते हैं कि आजकल टेक्निक सभी क्षेत्रों में बहुत उपयोगी साबित हो रही है। शिक्षण क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है।
प्राचीन समय से ही हमारे शिक्षण क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग होता रहा है और आज वो टेक्नोलॉजी अपने नए नए स्वरूप में सामने आ रही है, नई नई चीज़ें जुड़ रही हैं। अगर हम देखें तो प्रारंभ में हम लोग कॉपी पेन से, चौक से, ब्लैक बोर्ड से विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। बाद में धीरे धीरे इसमें थोड़ा विकास हुआ। हमने मैप्स का, मॉडल्स का, प्रोजेक्ट, एलसीडी प्रोजेक्टर, डिजिटल इंटरैक्टिव बोर्ड, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि चीज़ों का इस्तेमाल आजकल हम लोग करने लग गए हैं। इसी सब चीज़ों को देखते हुए आजकल महाविद्यालयों में आईसीटी रूम्स बनाए जाते हैं, वर्चुअल क्लास बनाई जाती है, स्मार्ट क्लास बनाई जाती है, जिससे विद्यार्थियों को सारी चीज़ें सुगमता से समझाई जा सके। इन सब चीज़ों की आवश्यकता क्या है? पढ़ने पढ़ाने में टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि विद्यार्थी को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से चीज़ें बड़ी रुचिकर तरीके से समझ में आती हैं। एक उदाहरण दूं, अगर हम किसी विद्यार्थी को ग्लोब के बारे में बताएं, मौखिक रूप से हम चाहे उसको जितना बताएंगे समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हमने उसके सामने एक ग्लोब रख दिया और उसमें उसको अक्षांश देशांतर रेखाएं समझा दी, तो बड़ी आसानी से उसकी समझ में सारी चीज़ें आ जाती हैं। कोई शब्द हम बार बार उसको बता रहे हैं कि ऐसा लिखिए, लेकिन उसके समझ में नहीं आएगा। अगर हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, बिल्कुल आसानी से उसको ग्राह्य हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी का अपना बड़ा महत्व है। चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं, रुचिकर तरीके से समझ में आती हैं। और आजकल जो समय की मांग हो रही है कि हम एक जगह पर बैठे हुए पूरे विश्व के विद्यार्थियों को, पूरे विश्व के लोगों को जोड़ सकते हैं, सबको हम अपनी बातों से अवगत करा सकते हैं। अमेरिका में बैठा हुआ एक विद्वान कोई लेक्चर देता है, पूरी दुनिया उसके लेक्चर को सुन लेती है। अभी हम लोगों ने देखा कि कोरोना काल में जब विद्यार्थी और टीचर्स कॉलेज में नहीं आ पा रहे थे, तो हम लोग मोबाइल पर गूगल मीट के माध्यम से या अन्य संचार के साधनों से विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। हमारी पढ़ाई बिल्कुल उसी तरीके से चल रही थी, बिना किसी बाधा के। तो टेक्नोलॉजी का अपना बहुत बड़ा महत्व है। एक और फायदा होता है इससे कि इससे संख्या की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। क्लास में एक साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 50 विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो संख्या असीमित हो सकती है। बहुत सारे लोगों को एक साथ हम पढ़ा सकते हैं। जो कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में स्पेशलिस्ट होता है, विशेषज्ञ होता है, वो सब जगह नहीं पहुंच सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने इसको संभव कर दिखाया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज के इस टॉपिक को डिसाइड किया है। मैं अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो प्रतिभागी हैं उन सबको बहुत उपयोगी साबित होगा आज का हमारा वेबिनार। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस के तिवारी सर। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं रसायन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार बोडाने सर को आमंत्रित करना चाहूँगा। सर आप आएं और हमारे आज के वेबिनार के प्रथम मुख्य वक्ता के परिचय से अवगत कराएं। आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार बोडाने सर। अरुण सर बोलें प्लीज, स्टार्ट करें अरुण सर। Arun sir, can you hear me?
माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा सिग्नल प्रॉब्लम चल रहा है, जिस रीज़न से शायद अरुण बुढ़ाने सर हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं अभी। सुधीर सर, हाँ सर बोलिए। बुढ़ाने सर को एक बार फिर से इनवाइट करें प्लीज़। हो गए, जुड़ गए, वो अरुण से जुड़ गए हैं। जी। हाँ अरुण सर। हेलो। हाँ हाँ अरुण सर, हेलो। स्टार्ट कीजिए आप। हाँ हाँ सर, आ रही है, आवाज़ आ रही है आपकी। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। जी सर, आ रही है आवाज़ आपकी। आप कंटिन्यू करें प्लीज़। हेलो। सुधीर सर। हाँ सर, आ रही है जी आवाज़ सर, आपकी। ऑडिबल हैं सर आप ओके। सुन पा रहे हैं? ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक you very much, Sudhir sir and Arvind sir. Today our keynote speaker of this national webinar organized in the college is a very young and talented scientist named Dr. Deepak Kumar. Dr. Deepak Kumar is recently working as project scientist at CSIR CSIO Chandigarh. He completed his PhD from Department of Physics, Punjab University, Chandigarh. His research area is photonics, metamaterials, 2D hybrid quantum materials, and extra. He has more than 13 research papers published in various national and international journals. There are more than 5 proceedings. His research work has received citations more than 314 with H index 10. You have more than 2 Indian patents on metamaterials, uh, and you have more than 2 books chapter. Uh, Very excellent work in research area, sir. You have been honored with more than 16 different types of awards. He is a member of SPIE, IEEE, Royal Society of Chemistry, and Prakash Bharati, and extra. He has participated in more than 15 national, international scientific events. You have been invited to lectures in many science related programs. Many more things can be told about sir, whether it is related to fellowship, teaching, or any other skills. But now I would not take too much time, and with great respect, I invite Dr. Deepak Kumar sir to come and present his potential lecture. Dr. Deepak Kumar sir. Yeah, thank you, Dr. Arunji. Am I audible? Deepak sir? Yeah, am I audible? Yeah sir, you are audible. I am interrupting you. Before your presentation, I would invite our college JVS committee president, Mr. Vipul Kaseira sir. Sudhir sir? जी सर। Sudhir sir? कसरा सर ऐड हो चुके हैं। जी। जी सर। कसरा जी ऐड हो चुके हैं हमारे साथ। अब मैं हमारे महाविद्यालय के जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष आदरणीय विपुल कसरा जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे आएँ और हमारे प्रतिभागियों को मार्गदर्शन देने की कृपा करें। आदरणीय विपुल कसरा सर।
सभी को मेरा नमस्कार। आज पंडित बाल कृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय शाजापुर द्वारा आयोजित अध्ययन एवं अध्यापन में आधुनिक पद्धति के प्रयोग का यह वेबिनार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो मैं इस आयोजन के लिए हमारे पंडित बाल कृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय की संपूर्ण टीम को बधाई एवं शुभकामना देना चाहूँगा कि उन्होंने यह बहुत अच्छे विषय पर यह वेबिनार आयोजन किया जा रहा है। फिर उसके बाद मैं इस वेबिनार में जुड़े हुए हमारे उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय के एडी महोदय एवं सभी बाहर से जो भी इस वेबिनार में जुड़े हैं वे मेरे महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकगण, समस्त विद्यार्थीगण को मेरा प्रणाम है। मैं आज के विषय में केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि शिक्षा पद्धति में और शिक्षा के बदलाव में जिस प्रकार से हमने कुछ समय में देखा है कि एक आधुनिकता पद्धति को जिस प्रकार से अपनाया जा रहा है और यह बहुत ही आवश्यक है। हम देखते थे पहले हम जब छोटे थे कि शिक्षा जो पढ़ाने का जो एक माध्यम होता था, हमारे क्लास के सर उनके कुछ थोड़ा अध्ययन करते थे, कुछ उनकी बुद्धि का उपयोग करके उनके पास जितना ज्ञान होता है उससे ज़्यादा अधिक प्रयोग करके वो हमें पढ़ाने का प्रयास करते थे। लेकिन वर्तमान कुछ समय में हम देख रहे हैं कि आधुनिकता पद्धति का जिस प्रकार से प्रयोग हो रहा है तो विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए यह वरदान साबित हो रही है। हम देखते हैं हमको अगर कुछ भी छोटी सी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, जानकारी की आवश्यकता पड़ती है, हम तत्काल उस गूगल कर लेते हैं और वह जानकारी हमें तत्काल हासिल हो जाती है। उसी प्रकार कोरोना काल से, लॉकडाउन के समय से विद्यालय, महाविद्यालय समस्त बंद थे, लेकिन शिक्षा बंद नहीं थी। उन्होंने नए नए प्रयोग करके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, ऑनलाइन क्लास चलाई और भारत में और विदेश में कहीं भी शिक्षा बंद नहीं हो पाई और विद्यार्थी अपना उस ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते रहे। हमारे महाविद्यालय में भी व्हाट्सएप ग्रुप समस्त क्लास के कक्षाओं के बने हुए हैं। मैं नियमित उसमें देखता हूँ कि महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकगण तरह तरह की प्रकार की सूचनाएं, नोटिस जो विद्यार्थियों तक आसानी से पहुंच सके वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से तत्काल पहुंच जाती है। विद्यार्थियों को भी समस्या नहीं आती, वो सूचना को पढ़कर जो भी उनकी योजनाओं का लाभ लेना होता है, जो भी महाविद्यालय की सूचनाएं रहती हैं उसको तत्काल वे प्रभाव में अमल करते हैं और वो जल्दी से शीघ्र उनका वो कार्य पूर्ण हो जाता है। तो शिक्षा के वर्तमान समय में इस आधुनिक पद्धति का बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है और हम चाहेंगे जिस प्रकार हमारा देश आज चंद्रयान 3 में चांद पर पहुंच गया है, आगे वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार से मेहनत की तो कहीं ना कहीं शिक्षा में आधुनिकीकरण भी उसी प्रकार से प्रयोग में ला करके हमारे देश के जो विद्यार्थी हैं उनको नया नया ज्ञान अर्जित कराया जा सके। मैं आज के इस वेबिनार में शामिल हुए सभी महानुभावों का हार्दिक हार्दिक आभार एवं धन्यवाद दूंगा कि और महाविद्यालय की पूरी समस्त टीम को बधाई शुभकामना दूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने वेबिनार आयोजित किया और आगे भी मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे ही अलग अलग विषय पर वेबिनार, सेमिनार आयोजित होते रहेंगे, विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव का लाभ मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विपुल कसेरा सर। दीपक सर, यू कैन कंटिन्यू। Okay, thank you, Sudhir ji. Let me upload the slides. मंत्री जी वहाँ पहुँच गए थे, लग के बोल रहे चल, मैंने कितनी मार्केट जाता फिर आ जाऊँगा। अपन सबकी
So our slides visible, right? Your slide is visual, sir. Okay, thank you. It's working. So, yeah, first of all, I'm thankful to BKSN Government College, Dr. Rakesh Rathore, Principal, Dr. Arvindji, Sudhirji, for the kind invitations and organizing this exciting lecture. So, as you know, the topic is modern technology enabled learning. How can we implement technology in our uh, education system so that we can improve the teaching as well as study, right? So, uh, can you make these slides on the main screen so that I can move? Wait for a sec, sir. Wait for some time. I'm trying to adjust this on main screen. अरविंद सर, हाँ, wait, sir. I'm trying. पीपीटी को रिमूव करके वापस से इसको ऐड करो. Exactly. दीपक सर, Now it is fine. It is visible. It is fine now, I think. It is okay? Yeah. Okay. So the message is today on modern technology enabled learning. So the main things which I want to discuss with you, like what are the platforms which we can use, and how can we use those platforms for different opportunities for both the teachers as well as the students, and how can we implement those platforms right at the classroom level uh, to improve the teachings, and what are the career options for the students. I have added few slides which can be helpful. So as you know, there are three broad terms like philosophy, science, and technology. So philosophy means what we think, and science to use to, uh, to think in an analytical way, right? And technology means to use the scientific thinking for some applications, right? So as you know, we act as a student as well as teacher, so both the study as well as teaching totally combine the total process of a learning, right? So this is a picture where you can see the teacher is there, the students are there, and the study and teaching both are going parallel, so it makes the complete learning process, right? So what are different opportunities, how can we use, what are the different technologies? Earlier the previous people's speakers, they have mentioned a little bit on these things, like recently the technology has come to the stage that I can see in your college in the background, so you can see the screen is there. So there are like video meetings we can do, right? And listen to the people outside the college premises, right? Also we can do the some demonstration, some activity in the classroom, so that right now there are many uh, the experiments which we do in our lab, so the small activity can be demonstrated right in the classroom level, whatever we teach. It helps to improve the teaching and help the students to gain fast and in an easy way, right? uh, like we can involve the students
in the group discussions that can be happened using the text, using the audio discussions, using the video discussions, using the computer. Right now it is available, so we can show and involve the students as well as the teachers in a group discussion. So these things can be, we should start, or we should basically promote in our classroom teaching. Basically, we can use the projectors, as a principal is telling. There are like smart classrooms that are being developed in the college, so they are helpful to show the presentations or the message or the lectures in the slides mode, and really the students will be benefited from them. So you can see these are the broad opportunities which are directly available at the classroom level in today's scenario. So how can we use these opportunities? What are different uh, programs which are being conducted by the government at different level, so that students can, you can send your students to participate here and there across the country and outside as well. So what are different programs which you can use, which you can gain, which you can target using this technology? I have mentioned in the next slide. So there are different programs that are being started by the government. So like there are DST Inspire camps. So these are basically camps which are held across the different institutes for 1 week. So you can send your students there. They can learn. They can basically use the facility available at different universities, different colleges, different research institutes, right? So there are DST Inspire camps. You can tell to your students, check. These are broad headings. You can check these headings rightly, state writing on the internet. You will get the details. There are internship programs. You can send your students uh, to do internships. Like there are summer holidays, there are winter holidays, so there are 1 to 2 months and even more internship programs. There are like NPTEL courses that are available online, so students write using their mobile or laptops, or even in the college, there are smart classrooms, so they can access those NPTEL lectures. So there are like, these lectures are prepared by intelligent researchers and professors across the country. And they are on the different subjects, so you can join those lectures, don't join those courses. Okay, there are, as far as physics is concerned, so there are like programs by Professor H.C. Verma, BSc lectures, they are there online. Okay, there are also for the teachers as well, there are faculty development programs, so you people can join different faculty development program, which will be helpful to access the technology and how we can easily interact with our students in an active way, right? There are different organizations. I am naming a few, like Indian Association of Physics Teachers, IAPT, Society for Promotion of Science and Technology in India, and there are science academies in our country. Indian National Science Academy in New Delhi, National Academy of Science in Prayagraj, Indian Academy of Science in Bangalore. So these different societies, they organize different kinds of events uh, in the physical mode as well as in the online mode. So both the teachers and the students, they can participate, they can go there and see what are the different facilities, what are the different technology that are being basically promoted across the world, and how we can implement those technology at our college level. So you can send your students to visit different laboratories, institutes, for the lab visits basically. So there are open day programs, means there are in a month there are some days which are open for the outsiders, so that they can visit. Or either you can email, you can contact the basically the director or the head of the departments, that you want to send your students and want to see what kind of research, what kind of technology is there, and you can visit the lab. So there are these are the things basically that can be promoted from the college side for the both the students as well as teachers. So there are also massive open line online courses, basically known as MOOC courses. So that are also available, like NPTEL courses, where you can basically register and listen to the speakers, listen to the different teachers across the world on different subjects.
Also there are like virtual tour of the labs. For example, if you cannot go physically in some institutes to visit their facilities, so you can request them that they can do a meeting, they can show the virtual tour and see what are the facilities and how they are helpful. Okay, there are digital libraries that are available where so many books, so many textbooks are there. Even at the college level, I can suggest that you can make a small digital library where whatever the subjects you teach to your students, so you can arrange the soft copies of the textbooks or the different materials, and you can make a library so that even if there are holidays, so they can access the library. So you can prepare a soft copy, a bundle of the soft copy that can act as digital library for your college the students, right? And second thing is like which I highlighted here in the red color, basically the update in the syllabus in view of the current updates of the subject. So there are regular updates in the curriculum like after 6-7 years maybe. So but most of the times whatever we teach and whatever the technology that is being developed at present, so there is a difference. So you can basically uh, you can basically tell to your students that this subject or this concept that is being progressed since this level. So you have to keep a regular update in your syllabus, in your subjects, in view of the technological developments. Okay, and as far as teaching is concerned, so whatever the examples we give, that should be from the real life. For example, if we are teaching, if we are telling the students about some vegetables, so there should be some we can purchase the vegetables and tell to the student, oh, this is tomato, this is potato. So there the example should be right. Like there are exhibitions that the college can conduct or and send to the students to participate. They can prepare some different models, so you can see what are the technology. There is one thing, the technology is there. There is another thing, to use that technology to grab different opportunities. So you can see this slides basically having different initiatives taken by the government, and the college also can pursue this initiative at their level, like managing digital libraries, soft copies of the books, and arranging different online lectures. I have like NPTEL, MOOC. So these are the things so that college can do, right? So also you can see there are other initiatives. These are like virtual labs, FEM, National Digital Library, Yantra. So these are different basically online platforms which are basically in view of the Ministry of Human Resource Development. Okay, so you just type the name and you will get the details, so that you can use the technology to access those educational platforms. So one event, for example, I have mentioned here, IAPT, Indian Association of Physics Teachers, National Student Symposium of Physics 2023, that is being going to conduct at Punjab University, Chandigarh, in the coming next 2 to 3 months. So in this event, so there are like you can send your students to participate in that event. You can send your students to present some work either in oral presentation or in the poster presentation way. The complete expenses starting from their travel to their accommodation is being governed by the university itself. So there is nothing to be paid by the student or the teachers from their pocket. Okay, so you can note down. So this is the event where I also participate during my MSc level in such programs. So this is highly beneficial. We have different types of lectures, different types of lab visits across the research institutes in the Chandigarh region. So you can send your students. So registration or the is still open, so they can register. Just type the name and you will get the details. Okay, so now the question is like the technology, how to use that technology and how we can improve those technology. How we can improve the teaching at our classroom level. For example, if we are I can see there are science faculties from the botany, chemistry, mathematics. So you have to train the students as a scientist. So how to think, we should think while doing science, how a scientist thinks. So this type of thinking, this type of training we should give to the students, right? For example, there are different theories in science, there are different assumptions in the sciences, in the different subjects, right? Whether it is arts, commerce, or sciences. So we have to tell to them how a original thinker thinks. For example, if we are talking about the Maxwell equations, for example, or if we are talking about, for example, the gravitational force, so how Newton have thought about the gravitational force, right? So you have to think, I mean, you have to provide that type of training to the student. It is not like just writing on the blackboard and
just rubbing the blackboard and then writing again something else, right? So you have to give the time to the student. You have to promote the basically the questioning in the classroom levels, right? So I have put some basic slides which are helpful for both the teachers as well as students. Like there are, the philosophy means the as I told in the beginning. So it is basically to think something, right? So there are different philosophers that have been there across the world, like Plato, Socrates. In our country, like Chanakya, Aruni, Gautam Buddha, right? So they have investigated different disciplines like poetry, law, astronomy, mathematics, ethics, right? So different fields have been explored, right? So what, how we should teach in our classroom level, how we should use the technology and the opportunities, and how can use those opportunities to improve the teaching at our classroom level. Okay, so फर्स्ट थिंग सम बेसिक पॉइंट्स विच आई वांट टू टेल, लाइक जैसे कि साइंस में आपने देखा होगा कि एक थ्योरी होता है, एक एक्सपेरिमेंट होता है। कोई भी थ्योरी तब एक्सेप्ट किया जाता है जब वो एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई हो जाता है। तो आपको स्टूडेंट्स को, वी कैन टेल टू द स्टूडेंट्स दैट ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कह रहा हूँ और आप मान लेंगे, दैट शुड बी वेरीफाइड, राइट? सो वी हैव, देयर इज one thing theory, there is one thing experiment, and if both satisfy each other, only that assumption is being accepted, right? And second thing is, right, if you develop a theory, if you develop a subject, if you develop a assumption, so there are parameters which are variable. कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो चेंज होते हैं, कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं वो एक जैसे रहते हैं। तो वी हैव टू टेक केयर ऑल दोस दीज थिंग। फॉर एग्जांपल एक जब कोई खोज करता है, कोई साइंटिस्ट है, कोई शोध करता है, जब काम करता है, तो उनको इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमने हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनमें लगातार बदलाव हो रहा है, राइट? और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनमें बदलाव नहीं हो रहा है, जो एक जैसे रह रहे हैं। उन सभी बातों का ध्यान रखते हुए एक अजम्पशंस तैयार की जाती है, एक थ्योरी तैयार होती है, राइट? हमें और कई ऐसे पहलू होते हैं, जैसे कि एक पहलू का दूसरे पहलू के साथ संबंध होता है, दैट वी कॉल रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट पैरामीटर्स, राइट? सो वी हैव टू टेक केयर ऑल दोस थिंग्स, राइट? Second thing is, what is the difference between a theory and experiment? If someone asks you what is the difference in theory and experiment, the difference between a theory and experiment is that a theorist tries to know the laws with the help of developed procedures, and it is ready to do all the mistakes which are necessary to get the correct answer, while the experiment moves forward in accordance with the law. इसका मतलब यही है, जैसे कि हम अपने क्लासरूम पे, अपने कॉलेज में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम कोई जब एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करते हैं, तो हमने जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, कुछ इलेक्ट्रिक कनेक्शन किए, तो जैसा हम सर्किट बनाएंगे, जैसा कनेक्शन करेंगे, जिस आपस में अलग अलग कंपोनेंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो मशीन जो होती है, हमारा डिवाइस जो होता है, वो तो उसी के हिसाब से अपना रिस्पॉन्स दिखाएगा, राइट? अगर हमने कनेक्शन जैसे करने चाहिए थे, अगर वैसे किए हैं तो वैसा रिस्पॉन्स दिखाएगा, और हमारे अनुसार जैसे करने चाहिए थे, अगर हमने वैसे नहीं किए, फिर भी मशीन तो अपने हिसाब से जो उसको रिस्पॉन्स दिखाना है वो दिखाएगी। तो देयर इज वन थिंग कि थ्योरी है, हम उसमें करेक्शंस कर सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ है कि जो मशीन्स का क्या रिस्पॉन्स आता है, राइट? तो मशीन साइंस जानती है पहले से, राइट? हम क्या करते हैं एज एन एक्सपेरिमेंटलिस्ट, एज ए साइंटिस्ट, एज ए थ्योरिस्ट, कि जो हम सोच रहे होते हैं उसको कैसे मशीन को बताएं, कि ताकि वो रिस्पॉन्स वही बताए जैसा हम चाह रहे हैं, ठीक है? सो देयर आर डिफरेंस बिटवीन ए थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से टू द पीपल, like when the students do experiment, when the students do practical in the classroom, so you should give time to the students. ऐसा नहीं है कि जैसे कि लैब मैनुअल होता है, आप क्लासरूम में प्रैक्टिकल करते हैं, तो आप स्टूडेंट्स को पहले ही दिन लैब मैनुअल बता दिया कि आप इसको रीड कीजिए और उसके हिसाब से एक्सपेरिमेंट कीजिए। गिव टाइम टू द स्टूडेंट्स कि उस बॉक्स को देख के, उस डिवाइस को देख के वो क्या सोचते हैं कि ये मशीन है, किस काम के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स किस काम के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। लेट देम थिंक, then you can help them. Don't do the spoon feeding. Okay, so there is a statement by scientist, Dirac, that I am reading for you. I must say that I am very dissatisfied with the situation, because so-called good theory
involve neglecting infinities which appear in its equations, neglecting them in an arbitrary way. This is not sensible mathematics. Sensible mathematics involves neglecting a quantity when it is small, not neglecting it just because it is infinitely great and you don't want it. एक बार उनसे पूछा गया कि एक गुड अच्छा थ्योरी क्या होता है, एक अच्छा गुड थ्योरी किसको बोलते हैं. उन्होंने कहा जैसे कि मैथमेटिक्स में जब बहुत एक स्मॉल क्वांटिटी होती है, समटाइम्स वी नेग्लेक्ट दैट, कि उसका अफेक्ट ज़्यादा नहीं होगा तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि मैं चाह रहा हूँ या कोई चाह रहा है कि इस क्वांटिटी को नेग्लेक्ट करना है तो नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है, भले ही उसका अफेक्ट ज्यादा हो या ना हो. तो यू हैव टू, देयर इज अ रीजन बिहाइंड accepting something, there is a reason behind neglecting something, right? So we have to take care those things, right? So the next thing which I want to discuss, whatever the technology platforms available to you with us, what are the technology platforms which we are using at the classroom level, right? Finally we have to grab the opportunities using all those things. So there are different options which are career options for the students, right? So you know there are different courses nowadays. पहले होता था कि कुछ फिक्स कोर्सेज ही होते थे. आजकल there are different types of courses that are being run across the country. I am naming few, like BSc, like I am taking mainly the science courses, like BSc. Also there are BSc honors where you can do some specialization in a particular subject, like BSc honors physics, BSc honors chemistry, like that. There are BTech, there are BSMS integrated. BSMS integrated means like आप पहले BS कीजिए, BSc कीजिए, फिर आप उसके साथ ही एमएससी कर सकते हैं. एमएससी के लिए आपको अलग से एंट्रेंस नहीं देना होगा. आप एक बार बीएससी में एंटर कर गए तो आप साथ में एमएससी भी कर सकते हैं. दैट इज बेसिकली इंटीग्रेटेड कोर्सेज. पहले होता था कि बीए, बीएससी, बीकॉम एक 3 साल का शेड्यूल रहता है, फिर एमएससी का, एमए का, एमकॉम का अलग रहता था. तो अभी देयर आर इंटीग्रेटेड कोर्सेज दैट यू कैन टेल टू द स्टूडेंट्स, राइट? देयर आर एमटेक, देयर आर पीएचडी, देयर आर फर्दर रिसर्च कोर्सेज. देयर आर मेनी स्कॉलरशिप like Inspire scholarship, like those who achieved great marks, like in the top 10 in their board exams, in the 10th, in the 12th. So based on that they can apply for Inspire scholarship, और पूरा वो बीएससी लेवल पे आपको मिलता है, और बीएससी के बाद एमएससी में कंटिन्यू होता है, और उसके बाद आप आगे पीएचडी में यूज कर सकते हैं. सो इंस्पायर दिस इज वन ऑफ द basically a well known fellowship that you can tell to the student, and this is they can get basically starting from their undergraduation, right? So Inspire. There are other scholarships that are available through different tests like GATE test, CSIR test, JEST. You can send to your students to do different projects. So there are university scholarship also, college scholarship also, state level as well as from the central level. Nowadays there are different institutes that are like state universities, there are central universities, there are National Institute of Technology, NIT, there are IIT, there are ICER, there is NICER, there are industry, there are company, there are DRDO, there are Indian Space Research Organization, ISRO, right? Baba Atomic Research Center, CSIR laboratory. So you can see there are so many institutes that are working in different fields. So your students, you can tell to the students like there are different institutes, and they can go there, they can educate, they can study further, they can further do research. In our CSIR Chandigarh, there is Indo-Swiss Training Center. So in this center, normally the students after doing their 10th or after doing their 12th, they can enroll there. There is a diploma program, like earlier Polytechnic is there. So there is a diploma program, 3 to 5 years program. After that they can it is I think run by with the Indo and Swiss. So after that they can patch up with the industry. Okay, so this is something new which the people of the at the village level, at the remote areas do not know. So you can tell, they can check this Indo-Swiss Training Center, okay, and tell to their friends, to their brothers and sisters that they can take admission, right? So they are different, and you can see there are different industries, right, that are nowadays in the country, right? So the broad message which I want to give from my sides to improve the teaching study at the classroom level, which is highly required, right? So for example, have you got any student who comes to you and asks how does that equation appear? For example, if I talk about any equations, how does the creator of that equation thinks? So we should train our students, we should train ourselves in such a way that the original thinker has thought about the concept, right? जैसे कि शुरू में जिन्होंने वो कंसेप्ट दिया है, जैसे मान लो न्यूटन ने कंसेप्ट दिया है, मैक्सवेल ने कंसेप्ट दिया, उन्होंने
कंसेप्ट बनाते वक्त, assumption बनाते वक्त, थ्योरी बनाते वक्त कैसे सोचा होगा, we should think, we should talk like that to the students so that they can think original, right? Spend time on looking towards equations. We should spend time with the equations. Also, the teachers, when they write some equations in the class, when they write some chemical reaction in the class, they should spend time, tell what is the element, what is its property. Spend some time. It's not like writing on the blackboard and just rub and finish the syllabus, right? So spend time and discuss the things, because those are the basically the conclusion of the theory, right? Okay. Like I told, in the practical sessions, like in the lab, so say the student to design the experiment, let them try, not just do the spoon feeding and just tell them connect this and that and do such type of mixing with the chemicals and the experiment is done. Let them do, let them think. Just basically promote the training, promote the thinking process basically. When your student walks, you should feel like yes, a science student is walking, a commerce student, a scientist is walking. So you have to basically build up that kind of confidence in them, right? So what as a teacher we do, for example, a scientist, a person has given some concept, has given some theory. So we as a teachers basically are science communicators. Like I am a science communicator, I am communicating my message to you, right? So एक concept है जो हम classroom में सिखाते हैं, वो concept किसी ने दिया है, right? किसी ने उसके बारे में बताया है. तो we teacher basically acting as a science communicator, right? We have to communicate that original knowledge gained by some scientist to the students. So we are basically simply teaching a theory given by someone else, not by me, right? Not if it is given by me or it is given by you, that is okay. If it is given by someone else, so basically we are acting as a communicator, right? So let us do our job strictly, right? Let us do our job strictly. So let us try to think and finally think in a way creators think. So let them think, let them promote the thinking process basically at the classroom level. And we should stay hungry and we should stay foolish. Because if you are foolish, then you can do, there is a chance for you to become intelligent, right? So then last, I'm thankful to the basically the text which I have taken from the online sources, and to you all people for patience for listening to me. And these are my research works which I'm currently working. So if any of your students want to do some internship at our lab or want to do some research work, project work at our lab, so they are basically welcome to do, and they can go through the work available here. So with this, I say, as one starts thinking, one starts becoming intelligent. So let the students think, let the teachers think, and let us use those thinking to basically employ to applicate basically different technological platforms for the benefit of the country and the society. Jai Hind. Dear participants, if you have any query or any sort of questions, just post in the chat box. Thank you very much, sir, for your informative lecture on this topic. आपने विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी को बहुत ही सहज और सरल शब्दों में प्रस्तुत किया. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. अब हमारे दूसरे प्रमुख वक्ता को इंट्रोड्यूस करने के लिए पुनः मैं डॉक्टर अरुण कुमार बोड़ाने सर को आमंत्रित करना चाहूँगा. आदरणीय अरुण कुमार बोड़ाने सर. Thank you very much, Sudhir sir. Thank you, sir. Can I audible? Audible, sir. Audible. Okay, fine. Thank you very much, Sudhir sir. Today, our imminent speaker of this national webinar organized in the college is very young and talented professor named Dr. Manoranjan Datta sir. He is currently posted as assistant professor at North Lakhimpur Autonomous College, Assam. You have
done your PhD from IIT Hyderabad. His research area are polymer physics, neutrino physics, and extra. He has more than 10 research papers published in various national and international journals. You have been honored with more than 10 different types of awards. He is a member of Royal Society of Chemistry, Prakash Bharati, Optica, and extra. He has participated in more than 16 national, international scientific events. You have been invited in many science-related programs. Many things can be told about sir, whether it is related to fellowship, teachings, or any other skills. But now I would not take too much time. And with great respect, I invite Dr. Manoranjan Datta sir to come and present his potential lectures. Dr. Manoranjan Datta sir. Hello everyone. Am I audible? You are audible, sir. Let me share my screen. Is my screen visible? Not yet. Yeah. Yes. Yes, You- it's visible, sir. Okay. Okay. First of all, thank you for the nice introduction, and thank you for the invitation. Just a little correction: I am not a member of a Royal Society of Chemistry. I'm a physics student. So, but really, I really appreciate BKSN Goft College and the Department of Higher Education Bhopal for organizing this very very fruitful webinar on use and utility of modern technologies in teaching and learning. So I really appreciate the organizers that they are organizing an event to discuss about technologies, because very rarely we get an invitation to talk about technologies in a conference, or even in fact very rarely the science and technology people organize a seminar or webinar on the technologies, although it is them who uses the technologies the most. So somehow, maybe due to the busy schedule in research and other activities, we talk less about the technologies that we ourselves use. So I really appreciate the effort by the organizers, and again, thanks for inviting me. It's really an honor. So before going to the main details of the technologies that we use, I really have to thank my previous speaker, Dr. Kumar, who talked a lot about how the technologies connect to, and how basically the online education, and how we can connect with different ideas and different people and different platforms, and also many of the government initiatives like from DST, SURB, and the upcoming conferences. So before going into, I would rather talk about the technicalities of different approaches, basically technology-based approaches that we can undertake. So, of all the outcomes or the fruits that we are getting from science and technology, I would personally say that the most important one of all of them is the inclusive education through technology. So the aim of an inclusive education environment is to ensure that all students are treated fairly and get equal opportunities. I think this is the most important aspect of technology, because due to various limitations of human, in spite of our willingness and our efforts, we have certain limitations. That's why we cannot do complete justice to
to all the students or all the stakeholders of the community. So the successful inclusive education primarily is accepting and understanding the differences among the students with respect to their physical, cognitive, academic, social, and emotional diversities. So once we appreciate and give our effort to address the differences among them, and in that case, actually technology plays a great role. And from yesteryears, we know the value of a good mentor and teacher, but not all the students have access to a quality teacher, because we are a vast country. We have several remote places where there are geographical disadvantages, or there are some kind of technological disadvantages. So now students are making the use of open source educational courses from universities like Oxford and Cambridge by sitting at home. So it makes these technologies makes classroom environment more invigorating with the use of audio visuals aids, and especially this inclusive education also includes the differently abled or specially abled students. I mean, right from the lifts and ramps that is used in the campus to the talking calculators or audiovisual aids, and and some modern software apps for them actually helps them to pursue the education at their pace, at their level, and according to their suitability and availability. So now the learners are more engaged and participate actively in the classroom in spite of their limitations. So this is also, I mean, this is one of the focus area of even like Sarva Shiksha Abhiyan mission. So now we are more focused on using the information and communication technologies, which are also termed as ICTs. So I think in the coming days, this ICT will play a bigger role to provide inclusive education. The next important thing in that we are getting from technologies is the teacher professional development through technology. And this is especially because I have even myself experienced it, because as we all know, as a new faculty member, we all have to go through certain professional development courses like induction programs, orientation courses. So now it may not be feasible for some faculties to get those courses at their hometown or according to their convenience of time. So now with the availability of online courses and availability of materials even after the live streaming, so we can access those content and learn at our convenience of time and our convenience of the place. So that is one of the major aspect. Recently I have taken this orientation program from Delhi University. So like this, actually we can get to the access from the quality educators, and those are experienced, which may not be available locally. So those so basically this teacher professional development includes his pedagogic competency, his personal competency, professional competency, and social competency. So these audiovisual aids and open educational resources, which is OER, and computerized student testing, this actually helps to make this whole professional development program more fruitful and more welcoming. So next, I will talk about something which is very important for the upcoming students, and it is what is known as the active learning. So active learning is a method of learning in which the students are actively and experimentally involved in the learning process, where there are different levels of active learning depending on the institutional involvement. So in this process, they are in charge of their education, and not necessarily the faculty take the charge of the class. It is the student who will take the class. So according to take the charge of at their own pace, at their own level.
So, when we start a course, when you take a lesson of a student, we have to appreciate the fact that all of them are coming from diverse backgrounds, be it social or be it intellectual. So when we start the class abruptly from a common starting point, it may happen that some of them are left behind in the very first class, in the very starting day. So when active learning is taken, then it involves the framing of the problems from the student's point of view, not from the teacher's point of view. So your teaching plan, your pace of giving the lecture will be from the student's perspective, and it will be more interactive if we conduct experiments, and if we offer some project based learning, if we allow them to discuss with their fellow friends and peers, and if we make the entire education, the lesson plan, as if they are discovering something new rather than dictating from our side. So this will include the pedagogy, technology, and space. Now, one of the way to engage in active learning will be to personalized learning, and this also, I mean, this have almost the same meaning. So what the essential ideas for personalized learning are like rich and self-paced curriculum, around the clock, anywhere, anytime access, and technology that enriches the learning experience, like smart boards and movies and videos. Because when I am now teaching quantum mechanics to the PhD students, it's very difficult sometimes to draw in a blackboard how the spherical harmonics looks like, how the whole wave function of hydrogen atom looks like. So in those cases, if we have a smart class, if we can show them in 3D how actually the 3D wave function of hydrogen atom looks like, then it is like mere plotting, just showing the analytic expression. It is actually they will, it is more interesting to actually see how the wave function actually looks like, rather than some XYZ functions. So then the frequent skill checks that and that guides progress. We can take this. There are many times are lost when you conduct an offline test, and it is also necessary that you do continuous evaluation. So if we can take some of this test online, and they can submit those assignments by doing it at home, and or even since, especially in the colleges, we are packed with so many responsibilities. So if there are some automatic answer checking methods, those are already available in many of the online platforms. So if we use them, then actually it becomes both cost effective and time efficient. So another aspect is the one-to-one teacher-student interaction. It is because you have to you don't have to throw a whole lecture, but you have to understand each individual student's depth of understanding, and then you have to prepare a lesson plan accordingly. So that is something about personalized learning. And then one new aspect in this regard is what is known as the blended learning system. So it is basically a technology enhanced hybrid system, I would say, because it is hybrid between the brick and mortar method, like that is our old school method with a blackboard and lesson and a blackboard, and it is not completely online also. Even the fully online processes have it's some of the disadvantages, because it is ultimately, if you leave everything up to the students, there are many unreliable sources in the web as well. So you cannot guarantee
I cannot guarantee the authenticity of those or correctness of those materials that are available online. So in fact, if we blend them together, if we make a hybrid between both the offline and online modes, we can take some traditional instruction, like at least we have to verify and guide them in the offline class, while they will actively participate, actively involve in the online education back at home. Then it becomes actually more forceful. And there are several ways of blend. There are several actually methods that have been proposed, and those are basically this rotation model, flex model, a la carte model, and enriched Bhaskar model. So these names actually speaks for themselves. So the rotation model, essentially, it is a part of traditional learning mode. But in a blended learning environment, online education becomes mixed with this traditional learning. So it again, we can subcategorize it into four subcategories. First one is the station rotation, and as the name suggests, this approach requires employees to switch among activities, allotting equal time to every aspect of the training program and acquiring knowledge in the most practical and advanced ways. For example, while dividing the students into groups and assigning them different tasks in form of separate stations. Suppose group A starts at station 1, online station 1, learning a new subject by reading articles, watching videos, lectures, presentations, etc. While a different group B is at station 2. They are also online, where they have to check for practical examples and case studies. And group C then begins at station 3, learning through discussion and brainstorming face to face. So these group rotate through these 3 stations, and ultimately they will be passing through all the stations. So this is what is known as the station rotation. Then the lab rotation, it is also similar to how students rotate among different activities in a station, but here the students rotate between face-to-face sessions and computer labs for online training. Then we have the flipped rotation. In flipped rotation, switches roles between the faculty and the physical attendance of the faculty and the online platforms, so that the faculties get all instructions and training online in the form of lectures and exercises. And during face-to-face sessions, the students help them with problems and provide assistance wherever needed. And then there is, of course, this individual rotation. And here, rather than managing the whole group in the same way, it requires dealing with every student's training individually. So that's why the name individual. And in number 2, we have the flex model. So in the flex model, the students are in charge of the class, and they learn mainly through the online platforms, while the faculties are there to help them whenever needed. So this has given more power to the students. The La Carte model, it implies, it's a friend's name, it implies the students can decide which courses they want to take online and which courses they want to take face-to-face. So this is another freedom. So it is like, if a student feels that, no, in this course I need more instructions from my teacher, so I'll be attending this class completely offline, completely in the class. And if some of the courses, if he is confident, then okay, I can manage. But it is also obviously subject to availability, and also it need to be assessed by the faculty after some time, after he finishes his online studies. Then there are enriched virtual mode, where student he spend more time in a web-based method and less time in the offline classes.
all of these have their own advantages and disadvantages, but yet, I mean, overall, this hybrid mode between the traditional classes and online classes has proven to be more fruitful in some of the studies. Next concept is the flipped classroom, which is a particular type of blended teaching only. So here, the student, usually what happens, I mean, in many classes, what happens, the student actually forgets everything, whatever you have taught in the class, and they will just take your note, and and then in home they will be lying reluctant to do anything. So in flipped classroom system, actually they will prepare the notes at home, and they will review the online course materials, watch online video, and they will do the literature survey mainly at home. But in school they'll be solving problems, difficult problems that actually needs the attention from the faculty. So they will do the obviously the lab experiments, and in theoretical courses they will do the hard and tough calculations in the classroom, just completely opposite to what happens in a traditional classroom. Next is obviously mobile learning that we are all aware of. We are all using even this conference now. We are learning from each other by joining remotely through mobile devices. So obviously the advantages are usability at your own convenience at any time, availability, convenient choice. We can use laptops, tablets, and mobile phones. So it is also cost effective, and one of the important thing is that it is durability in the if we somehow put our this knowledge in some web-based server. Basically our class copies, those physical copies, black and white paper-based copies, often turns out, or even the ink sometimes even the ink evaporates from the page. So if I want to now look back at how I studied in my school days, there is no proof or no evidence actually what I did. So in these cases, these learning devices have an advantage that we can save them till eternity, at least to the existence of the humankind. We can access them anytime, whenever we need. But otherwise, now otherwise we have to just go back to our station, and then we have to, if somehow we were lucky to get back to those old notes, then only we can pursue. So this is one of the major advantages, I would say. Now, disadvantage obviously includes the tech discrepancies, poor wireless connection, and for the student's perspective, the most important disadvantage is the distraction. I mean, it is not guaranteed that given a technology to a student's hand which is not very mature, he will always use it for useful purposes. He can obviously misuse it. So this is one of the major disadvantages, and that's why actually we need, although this we have to offer this technology to the student, but it should be properly guided and under supervision. Now, which coming age we have to prepare our students for international platforms. It is just not limited to, because when you are studying subjects like, in fact, any subject, you have to match with the international standard, and those practices should be started from the very beginning, school level itself. So many a times we come across students, those are brilliant in other ways, which have the adequate subject knowledge, adequate concept, but yet they couldn't express it in when presenting it to a group or to his peers, or in a conference or seminar. So if we want to build those concepts, build those confident in the students, then we have to start this project-based learning from the very, very beginning, from the school itself, actually. So this will include
the driving question. So the student will himself drive the question, and then he will search for the answers, and importantly he will publicly present it, in front of his friends or teacher. So those presentation skills are very necessary, becomes very necessary at certain point of time, and if we don't prepare them from a very early stage, it becomes difficult sometimes. So this is one of the one of the ways where technology can be used, because now they're open, they have open access to many enormously vast libraries, video conferences, and many online books, where they can study, they can see, they can learn how to present present their ideas to different platforms. So project based learning is one of the major component. And then this very closely related aspect is the collaborative learning. So it's okay if you can do 1 + 1 = 2 by alone. It's okay if you can solve a differential equation alone, but the real life problems are not that simple. Like, for example, our ISRO has launched successfully the Chandrayaan-3 mission. It includes thousands of scientists. So teamwork becomes very important when you get, because solving a differential equation will not solve the problem of a life or the problems of science and technology. So what you need is a team effort, is a collaborative effort. So we have to make the students practice this collaborative learning from the very early age, because be it the Indian experiments like ISRO, or be it the NASA, or the Large Hadron Collider at CERN, it needs thousands of scientists working together with a single goal but different components of the same problem. So that's why we have to infuse these ideas to the students from a very early age. It's very important. And then the assistive technologies in education. So now we have many assistive technologies, right from writing a lesson. We can use many platforms like Grammarly to check the grammar, the pronunciation, punctuations, and then we can take help in pronunciation from even Google, how to pronounce certain words, uh, and for how to prepare a note, especially for the students. So from those to the for the students, there are many note-taking devices. In fact, there are now devices which will even convert your writing to typed version. So those technologies have a profound impact on the upcoming education. It is not yet taken up all, not yet flourished, but I think in the next decade, not even the decade, in the next 4 or 5 years, I think we will see a jump of use, a giant leap in use of assistive technology in education. So then the next thing is obviously it's creating and working with content. So I'm not going to elaborate much about these things, because these are very well known. It's very good that if we, rather than, suppose if we are teaching them about the the plant cells or the animal cells in case of zoology, then it is very important that rather than talking about those constituents like mitochondria and ribosome and all these things, it's better to show them visually, by in photos or in videos. So creating content, now actually there are many things available in the YouTube itself. So when the student get a visualization of the subject, then it lasts longer in their brain, because the photographic memory or the videographic memory is always better than looking at some handwritten notes. So similarly, we can now, that's why it is, you see the
all the students in all the schools actually now celebrated this successful launch of Chandrayaan. And it was since it was video tele. I mean, if we do not have this facility of video telecasting, then what would happen? The next day we would have read in the newspaper that okay, it has been successfully launched. We would have appreciated, but it would not have a long-lasting impact on our memory. But now, since we have witnessed this as a video, so we are going to remember this for many years to come, that yes, we have witnessed this. So that's why it is very important to create content, interesting content that helps in education. So multimedia instruction is also, it falls in the same category. So we can use like computers and all other accessories for teaching learning. Virtual classroom and online education, there is nothing much to talk about, because even we in this particular webinar, we are connecting virtually. So this is the importance of virtual connection. I am being at Assam, I am connecting with you all people sitting at Madhya Pradesh. So there are many online classes now available on YouTube, like from MIT, from Oxford, even our own Indian institutes are offering the NPTEL lectures. And there are several others. I'm just naming a few. So you can attend those virtual classes by being placed on a very remote area of the country. So this is the blessing of the technology that we, the humans, have developed. And the social media in education, this is one of the important aspects, because by social media, many students the first thing that would come to someone's mind is Facebook or Instagram or Twitter. But social media can be very impactful in not only in science and technology, not only in education, but also in research, because these media like ResearchGate, Stack Exchange, LinkedIn, and since I am from physics background, so I know of this thing like Physics Forum, and I'm sure there are such forums for other domains as well. So here what happens that we don't interact about what someone is wearing or someone is eating, but what we are discussing is about the research problems. If you are stuck, if you're reading something about dark matter or neutrino, if you are stuck somewhere, then you post the question in those platforms, and someone or some of your peers or experts will address your question. That's also how the intellectuals can interact. So social media is not only limited to fun games and photos and reels, but it also can address the research level problems. So this is very important in education. So to make the education very interesting for the students, what we can do is that we can gamify the whole education process, like surprise tests and quizzes, and not necessarily be instructed by the faculty, but sometimes we can, under our supervision, we can let them play the whole game. We can let them build up these like quizzes and surprise tests and some challenges. So where they will feel more active, and they will feel that yes, we are doing something exciting. So many platforms like this Minecraft and Math Pleasure, Treasure Mountain, Google's Read Along, and even National Geographic Kids. Those things are exciting for the students. So yes, this gamification of education will make them more involved in the education process rather than sitting idle. Now, in my last part, I would like to talk about the assessment part. So for the assessment part, actually we can encourage the students to maintain their own e-portfolio. So this helps learners develop new and deeper learning. So what they will do is that it is a reflection of what they have done. So they will organize it digitally
they will make available, like we maintain our profile, so they will maintain a profile, what they have learned, what they have done, the assignment they have done, and so those will be assessed online by the faculty members, and can even evaluate online, and it will provide a feedback to the student. So the whole cycle will repeat on itself. So by that, we can reduce the time of engagement physically. But still, I would like to, this is as far as it is not very deep, but still I would like to emphasize that in-depth knowledge always needs physical presence of the faculty. So, but we can reduce that pressure substantially by maintaining e-portfolios of the students. Then the student response system, this is also a subcategory of the same thing. So this will increase, the both improve both online and offline learning, and encourage all students to participate. And there are actually some of the student response system softwares have been already developed, which we are not using in too much. But actually, many of these response system softwares have already been developed, and I think we will start using them in upcoming times. So for feedback and self-check, there are some of the platforms that like Cohort that I have used, and Quiz, this is another platform. So what we can here do is that we can if we do not even have our own websites or own platforms, if we do not own a a domain, even then these platforms actually provides you the platform for creating an online quiz, creating online question paper, creating online lecture notes, and then you can ask them to answer in the same link itself. So the answer will be again sent back to you, and you can mark them. Both MCQ type questions and short time log time questions are possible in these platforms like Quiz. So these are the two that I have used, but I'm sure the other ones will also be fruitful. Now, coming towards the end, the next decade, I think with the advancement of science and technology in recent years, so next big role will be played by robotics and artificial intelligence. So whatever I have discussed so far have already touched upon us. If have not wholly, but very substantially. But the next upcoming decade will be governed by developments in robotics and artificial intelligence. So we will be, I can see it happening in a decade that robots will be solving the assignment problems to the students, and it will be taking in charge of the tutorials. And they have also the added advantage that our memories are volatile. We often forget, we cannot remember. If you are teaching quantum mechanics, mathematical physics, thermal physics, and quantum chemistry, then you would not necessarily you can remember all the formulas, all the concepts together. Concept is fine, you may not remember all the formulas. Now these technologies have the added advantage because they are chip based memories, so they do not have that option to lose the memory unless it is broken or damaged. So they can solve like the assignments there, and they can take in charge of the tutorials for the students. And artificial intelligence, we all know about ChatGPT already. So it now has a database up to probably 2020 or 2017, but it has that is the advantage that it has, that once you have fed it with the information, it will never forget. It will just give you all the information as per your command. But the only thing here is that you have to choose the command precisely, and the not disadvantage but the caution we have to
take in this regard is that I mean, somehow, I mean, there are some scientists would fear that somehow it can become violent. So that is another aspect. But as long as we do not give that much freedom to these technologies, and we limit them so much as we need to help in our understanding, in our development, then I think they are pretty safe. And one of the example is like ChatGPT. And the other things are also like partial facilitator, data accumulation. These are also be helpful in education. So before conclude, let me just do a little advertisement of my own college. So we have actually affiliated with, I mean, this is also a virtual, I mean, why I'm telling this, because this is also one of the examples of use of technologies in teaching learning. Our college now has been affiliated with this Antariksh Pathyakrama of India Space Week, which is a nodal institute of Indian Institute of Remote Sensing, which is a unit of Indian Space Research, ISRO's outreach network. So I think your institute, the organizing institute, can also register for this kind of courses, and there are SWAYAM courses also, as you all know. So student can register, and those courses will be offered online, and they will be getting certificate and even diploma for these courses. So you can visit the website of India Space Week, and these are the kind of courses that are now presently being that will be offered shortly, like Python with space science and technology, planetary science and space exploration, overview of space science and technology applications. So these are the kind of courses which are not available locally, because we have many other courses to offer. Now we have in our college we have both BSc, MSc, and we are also planning to start the PhD here. So but these are some of the subjects that our students are very interested. So now with the help of this online education system, so they can have these courses, they can attend these courses, and they'll be benefited immensely. And at the end, this is my last slide. So this is an advertisement, and this is also an invitation to all of you to please join us, because we are organizing a national conference. Actually, it is the first national conference organized by our college, our department, which is Spark 2023 Symposium on Physics, Advances in Research and Knowledge. So we'll be accepting abstracts related to physics, and the focus areas are high energy physics, astroparticle astronomy, astrophysics, condensed matter physics, electronics, material sciences, and other allied subjects. I mean, that falls in closely to physics domain. So the call for abstract and registration is going on. So I request the members of your esteemed college to kindly join us for the success of this event. So with this note, I would like to thank all the organizing committee members, and especially Sudhir for contacting me, and all the faculty members for organizing this, first, and second for inviting me. It was really an honor. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच मनोरंजन सर फॉर योर वंडरफुल लेक्चर। आपने आज के वेबिनार के विषय और इसकी उपयोगिता को बहुत ही सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोरंजन दत्ता सर। अब कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में मैं प्रोफेसर प्रकाश बर्फा सर को आमंत्रित करना चाहूँगा। सर आप आएँ और हमारे प्रतिभागियों के एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंटेशन को संपन्न कराएं। प्रोफेसर प्रकाश बर्फा सर। Thank you so much, sir, for your nice gesture. Now we move on to the last session of the
national seminar organized by Bikasan Government College, Sajapur. So, for presentation part, that is paper presentations. Now, I would like to invite our first participant, that is Professor Arvind Sharma. He is serving as head of the Department Zoology, Bikasan Government College, Sajapur. So, Arvind sir, over to you. Thank you, Barfa sir. I hope I'm visible. My slide is visible. This is the today's theme of our national webinar, use and utility of modern technology in study and teaching. So first of all, I have covered the first part, that is use and utility of ICT. Information and communication technology is a captivating approach to enhance the student learning. Use of ICT in education has proven its importance due to its positive impact on the teaching and learning process. During COVID outbreak, ICT has also played a crucial role in the teaching learning process worldwide, as we all are familiar with that condition. ICT in education improves the learner's engagement and knowledge retention. ICT is performing a pivotal role between teacher and student to cater the educational needs of students. So these are some uses of ICT in education system and teaching learning processes. Learning methods are constantly improving, relying more and more on modern technology. Students learning itself through the use of audiovisual aids, interactive softwares, and electronic gadgets. There are some advantages or facilities which actually ICT perform a very important role. That are, first one is virtual attendance. Second one is live chat with educators. If the student have some doubts, they can easily communicate with their teachers. So this is the second one facility. Third one is on-screen face-to-face communication with teacher and student in real time. The last one is access to previously recorded lessons, etc. Somehow any student can, if they have forgotten to attend the lesson, so they can easily access the previously recorded lessons on online base. Educators are uses computers and tablets in classrooms. They actually make the education literally lighter, no heavy bags, as we all know. Second important function of this ICT, that is ease of access. Student can easily access the study material anywhere, anytime. Third one is provide a high level of computer literacy. As more and more student will use the computer, so the literacy in computer automatically increases. Fourth one is facilitate the studying through allowing the children to use multimedia material. And the last one is getting familiar with new technologies from an early age. All of these uses and facilities, there are certain challenges of implementation ICT in education system, and I have chalked all these challenges or barriers. First one is lack of trained teachers and technical support. Second one is unfavorable organizational culture
and poor attitude and belief, especially in rural areas. Third one is insufficient funds and shortage of equipments in educational institutions. Challenges of in understanding the language and content in which the computer softwares actually operating. So again, this is a big barrier in ICT implementation in education system. And the last one is resource related issues and internet facility, especially in the institutions located in rural area. As we all know, rural areas, there is a shortage of resources and other internet facilities, shortage or disconnection of internet also happen. So at the end of my presentation, I thank to all the organizing committee that they have provided me this valuable opportunity for presentation. Thanks again. Thank you. वोट ऑफ थैंक्स हो गया ना? Thank you so much, sir, for your wonderful presentation. Now, second participant for the presentation is Dr. Nilesh Mahajan. Dr. Nilesh Mahajan is Assistant Professor of Commerce in BKSN Government College, Sajapur. Dr. Mahajan will present his paper on अध्ययन अध्यापन में आधुनिक तकनीकी का उपयोग. So, over to you, Dr. Mahajan. Dr. Mahajan. Are you getting my voice? Yeah. You are perfectly audible. Carry on, sir. So, जी मेरी आवाज आ रही है आपको? yes, sir. You are audible, sir. आपकी आवाज आ रही है. प्रोफेसर या आप पूर्ण तरीके से आप सुनाई दे रहे हैं, सर. प्रोफेसर क्या सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है. हेलो सर, आपकी आवाज आ रही है. Sir, you are perfectly audible, sir. तो शायद प्रोफेसर को मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है, कोई बात नहीं. आप सभी को नमस्कार. मैं डॉक्टर निलेश महाजन, BKSN गवर्नमेंट कॉलेज शाजापुर, आप सभी के सामने अपना शोध आलेख प्रस्तुत कर रहा हूं. जैसा कि हमने अभी देखा, हमारे दूर से जो विषय विशेषज्ञ जुड़े हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुंदर पावर पॉइंट स्लाइड्स की वजह से और उसकी तकनीक का उपयोग करके हम लोगों को आधुनिक शिक्षण जो होता है, जो ऑनलाइन शिक्षण पद्धति है, उसके गुणों से यहाँ पर हमें अवगत कराया है. तो उसी विषय को हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं. मेरा जो शोध आलेख है उसका शीर्षक है अध्ययन अध्यापन में आधुनिक तकनीक का उपयोग. तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जब हमारे यहाँ पर कोरोना का संक्रमण अपने शबाब पर था, तो उस समय हमारा पूरा भारत और भारत के विभिन्न क्षेत्र लगभग बंद से हो चुके थे. यदि हम शैक्षणिक पर्यावरण की बात करें या उस समय स्कूल और कॉलेजेस की बात करें, तो वो भी लगभग बंद ही थी, क्योंकि उस समय हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो था सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना.
तो जब सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की बात आई तो हम लोगों का ध्यान गया कि शिक्षण कैसे करवाया जाए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसे कभी रोका नहीं जा सकता, इसको तो अनवरत जारी रहना चाहिए। और उसी समय अस्तित्व में आई या यूं कहें कि उसी समय बहुत तेजी से विकसित हुई हमारी आधुनिक तकनीकें। जी हाँ, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और उसने बहुत सारी चीजें अपने विवेक से इन्वेंट की है, और उन्हीं चीजों में एक है शिक्षण की आधुनिक पद्धति। कोरोना संक्रमण के दौरान और उसके बाद लगातार हमारे यहाँ पर आधुनिक तकनीक का उपयोग हुआ है, और इसने हमारे यहाँ सभी क्षेत्रों को, लगभग हम कह सकते हैं कि सभी क्षेत्रों में लगभग क्रांति लाकर रख दी है। शिक्षण का क्षेत्र भी अछूता नहीं है। आप जानते ही हैं, जब हम आधुनिक तकनीक की बात करते हैं तो इसमें हम कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और स्मार्टफोन और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, और इंटरनेट वगैरह जो होता है, सॉफ्टवेयर वगैरह जो होते हैं, इसके अलावा और जो आधुनिक तकनीकें होती है, उनका हम उपयोग करते हैं शिक्षण के लिए। यदि हम परंपरागत शिक्षण की बात करते हैं तो वहां पर हम क्लास टीचिंग की बात करते हैं, जहां पर शिक्षक और छात्र एक ही कक्षा में आमने सामने बैठे होते हैं और अध्ययन अध्यापन का कार्य होता है। तो यदि हम आधुनिक तकनीक की बात करें तो आधुनिक तकनीक में सिंक्रोनस और असिंक्रोनस दोनों तरीके होते हैं। सिंक्रोनस तरीके में जहां पर लाइव टीचिंग होती है, मतलब एक ही समय पर अध्यापक और साथ में छात्र एक ही समय पर किसी भी माध्यम से, या तो आमने सामने या फिर कहीं पर भी दूर बैठे भी जुड़ पाते हैं, और रियल टाइम में वहां पर टीचिंग का काम होता है। इसके अलावा यदि हम आधुनिक तकनीक में असिंक्रोनस तरीकों की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे असिंक्रोनस तरीके हमारे पास अवेलेबल है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, यूट्यूब पे आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, आप इंटरनेट के ऊपर जो ज्ञान का भंडार है उसको आप ब्राउज कर सकते हैं, आप ऑनलाइन बुक्स का अध्ययन कर सकते हैं। तो असिंक्रोनस तरीके जो वो भी काफी सारे हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। यदि हम इसके अंदर और यदि हम जानना चाहें तो हम देखते हैं कि अभी हमारा जो वेबिनार हो रहा है वो स्ट्रीम यार्ड के थ्रू हो रहा है। साथ ही साथ दूसरी जगह पे जो वेबिनार हो रहे हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना ही है, गूगल मीट हुआ या जूम हुआ, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हुआ। इसके माध्यम से ये जो एप्स हैं या ये जो पोर्टल हैं, इनके माध्यम से हम लोग लाइव टाइम पर हम लोग एक दूसरे से मीट कर पाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि हम अच्छी जानकारी चाहते हैं, किसी चीज का प्रैक्टिकल नॉलेज चाहते हैं, तो हम लोग इंटरनेट की सहायता से, यूट्यूब की सहायता से हम लोग बहुत बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस वहां पर हम देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर पर्सनलाइज्ड लर्निंग ऐप भी आ गए हैं। उसमें से बहुत से ऐप ऐसे हैं जिन्होंने आज प्रोफेशन आपको बहुत अच्छे से डेवलप कर लिया है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँ, बायजूस हो गया या अनअकैडमी हो गया, इसके अलावा फिजिक्स वाला का नाम आपने सुना होगा, और इसके अलावा और भी अन्य ऐसे एजुकेशन पोर्टल और एप्स अवेलेबल हैं जिन पर पर्सनलाइज लर्निंग की जा सकती है। पर्सनलाइज लर्निंग के बारे में बता दूं, यह जो लर्निंग है ये एक ऐसी लर्निंग होती है जो स्टूडेंट की अपनी क्षमताओं के हिसाब से होती है, उसके अपने पेस के हिसाब से होती है। वो अपनी सुविधा के हिसाब से, उसकी जो सीखने की क्षमता है उसके हिसाब से अपने कोर्स का चयन कर सकता है, और उसके लिए एक विशिष्टीकृत शिक्षण प्रणाली इसमें विकसित की जाती है, उसके माध्यम से उसको अध्ययन अध्यापन करवाया जाता है। आधुनिक तकनीकों की बात करें तो हमारी सरकार भी इस मामले में पीछे नहीं है। सरकार ने, शासन ने भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे शैक्षणिक चैनल शुरू किए हैं, जैसे कि स्वयं प्रभा हो गया, या इसके अलावा आप देखें तो दीक्षा हो गया। और यहाँ पर मैं हमारे उच्च शिक्षा विभाग की भी बात करना चाहूंगा। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश शासन में उच्च शिक्षा संस्थानों ने, कॉलेजों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनसे ई कंटेंट डेवलप करवाए गए हैं, और जो ई कंटेंट डेवलप हुए हैं वो पावर पॉइंट स्लाइड्स के माध्यम से डेवलप किए हैं, और उनको पोर्टल पर अपलोड किया गया है ताकि स्टूडेंट्स उन पोर्टल पर जाकर इन लेक्चर्स का उपयोग कर सकें। तो मेरे विचार से आधुनिक तकनीक बहुत ही सुंदर है। यदि हम इसके गुणों की बात करें, इसके सकारात्मक पक्षों की बात करें तो इसमें बहुत से सकारात्मक पक्ष होते हैं। पहला तो ये कि बहुत ही इसमें समय और समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, श्रम की बचत होती है। भाई आज हम लोग अपनी अपनी जगह पर रहकर हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास समय भी पर्याप्त रहता है, हमारे श्रम भी कम खर्च होता है।
इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये बहुत रोचक भी होता है। इसमें इतने मोड्स हैं, इतनी चीजें हैं कि बच्चों को हम बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से टीचिंग के बारे में अपने सब्जेक्ट के बारे में बता सकते हैं, और ये बहुत ही लर्निंग का एक इफेक्टिव तरीका होता है। इसके और सकारात्मक प्रयासों की हम बात करें तो इसमें क्वालिटी मेंटेन की जा सकती है। आपको एक से एक विशेषज्ञ जो होते हैं उनकी विशेषज्ञता का लाभ हासिल हो सकता है। आप सीखने के लिए केवल एक या दो टीचर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, पूरा वर्ल्ड आपको सिखाने के लिए यहाँ पर तत्पर है। आप एक बार इंटरनेट पर जाते हैं तो आपको अपने विषय को सीखने के लिए काफी सारी सामग्री यहाँ पर मौजूद होती है। इसके अलावा इसमें विविधता होती है, और मैं समझता हूँ कि लोचता भी काफी ज्यादा होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। पर यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि राह उतनी आसान भी नहीं है जितनी दिखाई देती है। हम इसके सकारात्मक पक्ष तो देखते हैं, लेकिन सकारात्मक पक्षों के साथ साथ कुछ नकारात्मक पक्ष भी होते हैं। जब हम आधुनिक तकनीक से अध्ययन अध्यापन करवाना शुरू करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी सीमा तो ये रहती है कि शिक्षक और छात्र दोनों के बीच में एक जो भौतिक लगाव होना चाहिए, जो एक भावनात्मक लगाव होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। मैं आपको बता दूं कि मनुष्य जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है, उसमें इमोशंस होते हैं, वो एक मशीन नहीं है। तो जब कक्षा में बच्चा आता है और शिक्षकों से पढ़ता है तो उसको बहुत सारी दूसरी चीजें भी सीखने को मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम मानवीय मूल्यों की बात करें तो आदर होता है, अनुशासन होता है, सामाजिकता होती है, सहयोग भावना होती है, समय की पाबंदी होती है, और साथ ही साथ इमोशनल सपोर्ट होता है। ये जो चीजें हैं ये हमें अध्ययन अध्यापन की जो आधुनिक तकनीक होती है उसमें कहीं ना कहीं हमें कमी पाई जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आधुनिक तकनीक में संचार के साधनों का उपयोग होता है, स्मार्टफोन का उपयोग होता है, मोबाइल फोन का उपयोग होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, लैपटॉप चाहिए होता है, और ये साधन कहीं ना कहीं महंगे होते हैं। हमारा जो देश है आज भी उसकी जो आबादी 65% से अधिक आबादी गाँव में बसती है, और वहाँ के लोग जो होते हैं वहाँ पर दो तरह की समस्या होती है, या तो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं, या फिर वहाँ पर सुविधाएं नहीं होती है, कनेक्टिविटी नहीं होती है इंटरनेट वगैरह की। तो ये भी इसकी कहीं ना कहीं सीमा आती है। जब आप ज्यादा स्मार्टफोन का उपयोग करते हो, कंप्यूटर स्क्रीन का उपयोग करते हो, तो आपको मानसिक तनाव होता है, आपकी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं सेफ्टी कंसर्न भी इसमें आते हैं, सुरक्षा के मुद्दे भी आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आजकल के विद्यार्थी जब पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं तो उस पर बहुत सारी दूसरी साइट्स भी आती है, और कई साइट्स ऐसी होती है जहां पर जो गलत साइट्स होती है, जहां पर आप उनके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। अब चूंकि वो रोचक तरीके से चीजों को पेश करते हैं तो हम न चाहते हुए भी उस पर क्लिक कर देते हैं, और कई बार हमारा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसकी लिमिट होती है। एक जो चीज है वो सेल्फ मोटिवेशन नहीं रहता, सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता। बच्चा पढ़ता तो पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन का उपयोग करता है, स्मार्टफोन लेकर पढ़ने बैठता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि वो अपने अध्ययन अध्यापन से भटक जाता है और सोशल नेटवर्किंग की तरफ चले जाता है। फेसबुक खोल लेता है, व्हाट्सएप खोल लेता है, या इंस्टाग्राम खोल के वहां पर जो रील्स स्टोरी वगैरह होती है वो उसकी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी इसकी एक सीमा होती है। और मेरा जो मत है, मेरे मत के हिसाब से आधुनिक तकनीकें अच्छी होती है, आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन शिक्षा का जो मूल उद्देश्य होता है कि एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना है, एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना है, जो राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति बन जाए। तो कहीं ना कहीं उस उद्देश्य में हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं। यदि निष्कर्ष की बात की जाए, सारांश रूप में यदि हम कहें, तो मैं कह सकता हूं कि अध्ययन अध्यापन में आधुनिक तकनीक का उपयोग गलत नहीं है। अध्ययन अध्यापन में आधुनिक तकनीक का उपयोग निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, लेकिन इसकी एक लिमिट होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें परंपरागत शिक्षण पद्धति से ही अध्ययन अध्यापन करना चाहिए, लेकिन एड ऑन के रूप में और ज्यादा सीखने के लिए हमें आधुनिक तकनीकों का उपयोग उसमें मिश्रित करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ब्लेंडेड लर्निंग का जो कंसेप्ट है, मिश्रित अध्ययन पद्धति हम लोगों को अपनानी चाहिए। वो अध्ययन पद्धति हमारे यहाँ पर शैक्षणिक वातावरण को दशा और दिशा सुधारने में मेरे हिसाब से उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो यदि हम ये कहें कि क्या आधुनिक तकनीक के द्वारा परंपरागत शिक्षण पद्धति को बदल देना सही है, तो इसका जवाब होता है नहीं, सही नहीं है। हमें आधुनिक तकनीक की कुछ अच्छी चीजों का, सकारात्मक चीजों का मिश्रण हमारी परंपरागत पद्धति की तकनीकों में करना चाहिए, और शिक्षकों द्वारा इस चीज को मोटिवेट करके छात्रों को शिक्षा देनी चाहिए, तभी राष्ट्र के लिए अच्छे नागरिक तैयार हो पाएंगे। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका दिया। पूरी आयोजक टीम को, आदरणीय प्राचार्य महोदय को, जहाँ पर जुड़े विषय विशेषज्ञों को,
साथ ही जितने भी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हैं, जो प्रतिभागी जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका जो प्रेजेंटेशन था वो बहुत ही आकर्षक था। नाउ थर्ड पार्टिसिपेंट for the presentation is Dr. Dilip Gupta from Swami Vivekananda Government College, Sarangpur, District Rajgarh. Sir is also a key member of e-content development of Madhya Pradesh Higher Education. So now I invite Dr. Dilip Gupta. सर क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, यू आर परफेक्टली ऑडिबल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इस शानदार वेबिनार के आयोजन के लिए सर्वप्रथम महाविद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत साधुवाद। एक बहुत ही सुंदर और सफल आयोजन हम देख रहे हैं। बड़े बड़े विशेषज्ञों को आपने आमंत्रित किया और उनको सुनने का सौभाग्य हम जैसों को भी प्राप्त हुआ, तो इसके लिए भी आपको सर हृदय से धन्यवाद। मेरा विषय है शिक्षा में आधुनिक तकनीक का उपयोग एवं उसकी उपयोगिता। हम सब जानते हैं वर्तमान युग तकनीक का युग है। तकनीक के सहारे ही हम धरा से आकाश तक, अंबर तक और अब तो चांद के दक्षिणी ध्रुव तक भी पहुंच गए हैं। तकनीक ने हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, हर पहलू में क्रांति ला दी है। प्रौद्योगिकी एक डिजिटल मंच प्रदान करती है और आजकल ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। आज हम जिस वेबिनार के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क कर पा रहे हैं, ये भी तकनीक का ही कमाल है कि मैं बैठा हूँ सारंगपुर में और हमारे जो आदरणीय संयोजक महोदय हैं वो बैठे हुए हैं शाहजहाँपुर में और दुनिया के लोग, देश के लोग इसको सुन पा रहे हैं। शिक्षा और शिक्षण भी इससे अलग नहीं है। समय के साथ सीखने के तौर तरीकों में बहुत बदलाव आए हैं। तकनीक के युग में शिक्षा भी अब बड़ी ही रचनात्मक हो गई है, बड़ी ही रोमांचक हो गई है, बड़ी ही आसान हो गई है। कक्षा के अंदर बैठकर पढ़ना अब हम कह सकते हैं कि काफी हद तक बीते जमाने की बात हो गई है। हालांकि मैं हमारे पूर्व वक्ता आदरणीय नीलेश सर की बात से सहमत हूं कि हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, वो तो कंटिन्यू रहेगी, चलेगी। लेकिन फिर भी समय बहुत बदल चुका है और हम ये देखते हैं कि अब शिक्षा में तकनीक का प्रयोग बहुत ज्यादा होने लगा है। ब्लैक बोर्ड वाला समय अब नहीं रहा है। वैसे भी ब्लैक बोर्ड तो काफी पहले से हट चुके हैं, उसके स्थान पर ग्रीन बोर्ड आ ही चुके थे, पर अब हम उससे भी बहुत आगे निकल चुके हैं। अब हम दुनिया में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो धरा पर हो या आसमान में या कहीं और, हम उन सारी घटनाओं को इस तकनीक के माध्यम से अपने विद्यार्थियों तक पहुंचा पाते हैं, उन्हें समझा पाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक बहुत अच्छा माध्यम है तकनीक, जिससे हम प्रभावी प्रस्तुतिकरण के द्वारा अपनी बात को विद्यार्थियों तक पहुंचा पाते हैं। आधुनिक तकनीक ने शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए सीखने और सिखाने के जो तरीके हैं उनको बहुत हद तक बदल दिया है, आसान कर दिया है। 24/7 24 घंटे 7 दिन किसी भी समय कभी भी जब हमारी इच्छा हो हम सीख पाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन का युग आ गया है, तकनीक का युग आ गया है। कक्षाएं निश्चित रूप से जो पहले 10 साल पहले हुआ करती थी या 5 साल पहले हुआ करती थी, उससे कहीं बेहतर हो चुकी हैं। शैक्षणिक वातावरण बहुत तेजी से बदला है। आज हम अगर महाविद्यालय या विद्यालय की कक्षाओं को भी देखें तो वो आधुनिक संसाधनों से लेस हैं। वहाँ इंटरनेट की सुविधा है, वहाँ स्मार्ट क्लासरूम है, यानी बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तकनीक का उपयोग सब जगह होने लगा है। स्कूलों में, कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लासेस, इनका उपयोग होने लगा है और समय की मांग भी है कि समय के साथ साथ हम थोड़ा आधुनिक हों, थोड़ा एडवांस हों, ताकि हमारे विद्यार्थियों को जो शिक्षा हम देना चाहते हैं वो और प्रभावी ढंग से दे पाएं। कई बार हम देखते हैं स्कूलों में बच्चे जाने से कतराने लगते हैं, लेकिन आजकल स्थिति बदली हुई है। वहां जब वो एक बड़ा सा स्क्रीन देखते हैं, बड़ा सा एक, जिस तरह से वो घर में दिन भर मोबाइल पर खेलते हैं, उसी तरह की चीज जब वो स्क्रीन पर अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में देखते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता नहीं कि हम स्कूल में बैठे हैं। यानी वो अब अध्ययन अध्यापन से ज्यादा अच्छे से जुड़ पाते हैं,
एक दूसरे के संपर्क में आ पाते हैं और जो बात हमारे शिक्षक कहना चाहते हैं वो आसानी से हमारे बच्चों तक पहुंच पाती है। कंप्यूटर सिस्टम, प्रोजेक्टर, ये सब आधुनिक तकनीक के संसाधन हैं जिन्होंने अध्ययन अध्यापन को बहुत उपयोगी, बहुत आसान बना दिया है। हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके माध्यम से घर बैठे दुनिया के किसी भी शिक्षक को, किसी भी महाविद्यालय या विद्यालय की शिक्षा को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन माध्यम से बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे ऐप उपलब्ध हो गए हैं, जैसा हमारे पूर्व वक्ता ने भी कुछ क्लासेस, कुछ संस्थाओं, कुछ ऐप के नाम बताए। ई दीक्षा हो सकता है, स्वयं हो सकता है, स्वयं प्रभा हो सकती है, ई पीजी पाठशाला हो सकते हैं। ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां बहुत सारे वीडियो भी अवेलेबल है, ई कंटेंट भी अवेलेबल है और लाइव क्लासेस भी उपलब्ध हो पाती हैं। तो इन सब के माध्यम से हम अपनी जो शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं वो बहुत तेजी से बदलती हुई हमें नजर आती है। यूट्यूब, कौन इसका उपयोग नहीं करता? छोटे छोटे बच्चे रील्स बनाते हैं और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर उनको अपलोड करते हैं। तो ये सब क्या है? कहीं ना कहीं ये आधुनिक तकनीक का उपयोग है जिससे हम एक दूसरे को ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, चाहे वो ज्ञान बहुत अधिक उपयोगी हो ना हो, लेकिन वो हम एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हम ये देखते हैं कि वर्तमान समय में मोबाइल एप्लीकेशंस भी इतने सारे आ गए हैं जिनके माध्यम से हम घर बैठे बहुत कुछ सीख पाते हैं, सीख लेते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षण की जो तकनीकें हैं वो पूर्ववर्ती शिक्षण तकनीकों से बहुत बेहतर अवस्था में पहुंच चुकी है। आधुनिक तकनीक के कारण अब शिक्षा तंत्र सबकी पहुंच में हो चुका है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र में रह रहा हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा हो। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे भी अपने दैनिक कार्यों के साथ ही साथ अध्ययन अध्यापन कर पाते हैं। कई बार हम देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरते हैं तो वहाँ बच्चे गायों को या भैंसों को चराते हुए दिखते हैं, बकरियों को चराते हुए दिखते हैं, लेकिन उनके हाथ में एक मोबाइल होता है। देखकर दिल को खुशी होती है कि इन बच्चों तक भी शिक्षा पहुंच सकती है यदि वे और बच्चे उस तकनीक का, उस मोबाइल का सदुपयोग करें, तो वो वहां पर बैठकर भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उच्च कोटि के शिक्षकों, प्राध्यापकों सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उनकी बातों से सहमत या असहमत हो सकते हैं, कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। धरती पर बैठकर आसमान में हो रही घटनाओं को देख पाना भी आज हमें रोमांचित करता है। ये सब तकनीक है, तकनीक ने ही हमें ये सब उपलब्ध कराया है और इन्हीं माध्यमों से हम आज शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। भौगोलिक सीमाओं का बंधन तकनीक ने समाप्त कर दिया है। इंटरनेट एक ऐसा आविष्कार रहा है जिसने पूरी दुनिया को एक छोटा सा बाजार या छोटा सा स्थान, एक छोटा सा शहर बना दिया है। आज हम यहाँ बैठकर अमेरिका के प्रोफेसर को या कुछ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को सुन सकते हैं या उनकी बातों को समझ पाते हैं। दूरियों के भय तकनीक ने मिटा दिए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि तकनीक का जो सर्वाधिक लाभ हमें प्राप्त हुआ है वो शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है, हो रहा है और आगे और होगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। प्राथमिक शिक्षक हो या शोधार्थी, विद्यार्थी हो या विषय विशेषज्ञ, सभी इस तकनीक का उपयोग करके अपने अपने क्षेत्रों में ज्ञानार्जन कर रहे हैं। एक शोधार्थी भी जब शोध कार्य करता है तो उसको विभिन्न प्रकार के एप्स प्राप्त होते हैं, विभिन्न प्रकार का संसाधन प्राप्त होते हैं, विभिन्न प्रकार का मटेरियल उपलब्ध हो पाता है। ये तकनीक की देन है जो घर बैठे ही वो अपने अध्ययन अध्यापन में या शोध कार्य में बहुत सारी चीजों को शामिल कर पाता है। तो समय की मांग है कि शिक्षा से जुड़े हुए सभी पक्षकार इस तकनीक को अपनाएं, इसके साथ तालमेल बिठाएं। ये नहीं चलेगा कि तकनीक दुनिया को कहाँ ले जा रही है और हमारे शिक्षक या प्राध्यापक या विद्यार्थी इस तकनीक को अपनाने में संकोच करें। बिल्कुल नहीं, हमें इस तकनीक को अपनाना होगा। यही इस तकनीक की उपयोगिता है और तभी शिक्षा का भला हो सकेगा। यद्यपि प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। स्वाभाविक रूप से इसके
बहुत अधिक लाभ है, वहीं दूसरी तरफ कई सारी इसकी कमियां और हानियां भी हैं, जो भी मेरे पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात में रखी है। मैं भी संक्षेप में कहना यही चाहूँगा कि तकनीक का उपयोग किया जाए अधिक अध्ययन, अधिक अध्यापन, अधिक सीखने के लिए, लेकिन कहीं हम इस तकनीक का उपयोग करके दिशा भ्रमित ना हो जाएं। हमारे विद्यार्थियों को, हमारे बच्चों को जब हम देखते हैं कि उनके हाथ में मोबाइल होता है लेकिन वो गेम खेलने में उसका उपयोग करते हैं, या मूवीज़ देखने में उसका उपयोग करते हैं, या रील्स बनाने में उपयोग करते हैं, या व्हाट्सएप और फेसबुक की चैटिंग में उसका उपयोग करते हैं, तो ये महसूस होता है कि ये तकनीक का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस तकनीक का सदुपयोग करके वे कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, ये उन्हें भी समझना है और हमारा भी ये दायित्व है कि हम उन्हें समझाएं। तो मैं अंततः निष्कर्ष रूप में यही कहना चाहूँगा कि अध्ययन, अध्यापन और शिक्षण में आधुनिक तकनीक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। बस आवश्यकता है सावधानी पूर्वक इसका उपयोग किया जाए, सदुपयोग किया जाए और इसको सही तरीके से उपयोग करके जीवन को धन्य किया जाए, लाभान्वित अपने विद्यार्थियों को और स्वयं को किया जाए। थैंक यू सो मच। ध्यान से आपने मुझे सुना और ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर आपके शानदार वक्तव्य के लिए। फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स आई वुड लाइक टू इनवाइट द कन्वीनर ऑफ दिस वेबिनार, प्रोफेसर सुधीर सवासिया। थैंक यू सो मच प्रकाश बर्फा सर। वेबिनार की इस अंतिम कड़ी में मैं आभार प्रदर्शन के लिए वनस्पति शास्त्र विभाग के उपाध्यक्ष एवं इस राष्ट्रीय वेबिनार के को कन्वीनर डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा सर को आमंत्रित करना चाहूँगा। सर आप आएं और सभी का आभार व्यक्त करें। आदरणीय डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा सर। धन्यवाद सर। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। वेबिनार के समापन पर मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से सर्वप्रथम इस नेशनल वेबिनार के सम्माननीय मुख्य वक्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर दीपक कुमार सर, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट CSIR CSIO चंडीगढ़, और डॉक्टर मनोरंजन दत्ता सर, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स लखीमपुर असम। आप दोनों सम्माननीय प्रमुख वक्ताओं ने आज के वेबिनार में यूज एंड यूटिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन स्टडी एंड टीचिंग विषय पर जो ज्ञानवर्धक जानकारियां हमें प्रदान की है, निश्चित रूप से इसके द्वारा सभी प्रतिभागी इस वैल्यूएबल नॉलेज का उपयोग करके अध्ययन और अध्यापन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। सर आपका बहुत बहुत आभार और पुनः धन्यवाद। इसके बाद में उज्जैन संभाग के अतिरिक्त संचालक महोदय तथा मुख्य संरक्षक आदरणीय डॉक्टर HL अनिजवाल सर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सर आपके द्वारा एकेडमिक एक्टिविटीज से संबंधित मार्गदर्शन हमें निरंतर रूप से प्राप्त होता रहता है। आपका पुनः हार्दिक धन्यवाद सर। साथ ही आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तथा जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री विपुल कसेरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार। सर आप अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकालकर इस राष्ट्रीय वेबिनार में जुड़े तथा हमें मार्गदर्शन प्रदान किया, इसके लिए आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय और संरक्षक आदरणीय डॉक्टर RK राठौर सर का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सर आपके निरंतर मार्गदर्शन से आज का यह वेबिनार सफल रूप से संपन्न हो पाया है। साथ ही महाविद्यालय के IQAC कोऑर्डिनेटर आदरणीय डॉक्टर SK तिवारी सर का भी हृदय से आभार और धन्यवाद। सर आपने सभी को वेबिनार की आवश्यकता एवं उपयोगिता से अवगत कराया, साथ ही समय समय पर मार्गदर्शन भी प्रदान किया, इसके लिए आपका पुनः हार्दिक आभार सर। आज के इस वेबिनार का संचालन कर रहे कन्वीनर प्रोफेसर सुधीर सवासिया सर, कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अरविंद शर्मा सर, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर AK बोडाने सर, जॉइंट सेक्रेटरी प्रोफेसर प्रकाश बर्फा सर सहित पूरी वेबिनार ऑर्गेनाइजिंग टीम और महाविद्यालय परिवार के
सभी प्राध्यापक गण तथा स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद तथा हार्दिक आभार। आप सबकी मेहनत तथा प्रयासों से यह वेबिनार सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया है। और अंत में इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सबने इस महत्वपूर्ण विषय पर आधारित वेबिनार को ध्यान से सुना और समझा, जिससे यह वेबिनार सफल बन पाया। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन। आगे की कार्यवाही के लिए मैं प्रोफेसर सुधीर सवासिया सर को बुलाता हूं कि वह फीडबैक फॉर्म व सर्टिफिकेट से रिलेटेड जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए आवश्यक सूचना है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक फीडबैक लिंक प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से आपको आज शाम 6 बजे से पूर्व तक फीडबैक सबमिट करना है। इसके बाद ही आपको ई सर्टिफिकेट प्राप्त हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद।